ओके, स्टार्ट करें सर. So on the Saturday's class, we have, I think, just read some part of CAS 103, right? So what we have learned in CAS 103, what should be the major objectives? What are the major objectives, everyone? Absolute assurance or reasonable assurance? Reasonable assurance. And the second one is to ensure that we should give the reasonable assurance along with the suggestions and observations, right? उसके बाद I think most of the definitions which you have done in this part was as similar as what remaining parts, that is audit, audit partner, audit risk, audit team, auditee, auditor, cost audit, cost auditor, firm management, misstatement, and only the next thing was what? Non-compliance. So non-compliance can be of two types, intentional and unintentional. What is intentional non-compliance? Frauds. Unintentional are nothing but called error. But are we bothered about non-compliance of the entity? ओए क्या नींद आ रही है? इतना बड़ा मुंह खोलता तू, नींद आ रही है? Are you feeling sleepy? Sure. No, I have an idea how to make a sleepy person non-sleepy. If you want, I can. Huh? Once should I try? हाँ, नहीं मेरे पास तो बहुत आइडिया है. हाँ, एक तो आइडिया है क्लास से बाहर निकाल देना, एक आइडिया है स्टैंड अप करके पूरा रीड करवाना ताकि तुम्हारी वो नींद भाग जाए. तेरे को भी नींद आ रही है बट तेरे को आती है बहुत, है ना? अच्छा. हाँ ठीक है, चलो. नेक्स्ट वन, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्रोफेशन, क्रिटिसिज्म. आई थिंक दैट वाज द लास्ट टॉपिक वी डिड. क्रिटिसिज्म मे बी कंस्ट्रक्टिव और मे बी व्हाट डिस्ट्रक्टिव. अच्छा, ये टॉपिक है ना अपन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में व्हेन वी विल गो इनटू द मैनेजमेंट ऑडिट पार्ट. ठीक है ना? देयर विल अंडरस्टैंड. रिस्क असेसमेंट, यू ऑलरेडी नो. हाउ डू यू आइडेंटिफाई कंपनीज रिस्क? बाय अंडरस्टैंडिंग द थ्री थिंग्स. वन इज द एंटिटी and one is the entities with system, internal control system, by which you will come to know about the ROMM. What is ROMM? Risk of material mistake. And what do we do when we see the ROMM? Should we increase it or reduce it? Reduce it. We can't eliminate it. We can only what? Reduce it. And next is TCWG. If you remember, full form I told you, those charged with governance. कौन होते हैं ये? Basically, let me tell you one thing. Those people who are the KMPs of the company plus audit committee. Which committee? ये लोग वो होते हैं who are better in position as compared to board of directors. So that's why they are known as what? TCWG. अब what is the requirement of this standard? The cost auditor shall comply with the ethical requirements including those pertaining to independence in respect of cost audit engagement. Can you please tell me the 5 ethical requirements which you have to follow? Integrity, objectivity, confidentiality, professional due care, and professional behavior. We have already done that in professional ethics. उसके बाद next point, while conducting an audit, the cost auditor shall comply with each and every cost accounting standard. How many we have? 101, 102, 103, 104. पहले बताओ 101 क्या था? Planning and performing a cost audit. What is 102? Documentation. 103 we are doing right now. That is called overall objectives of the cost audit and conducting the cost audit as per the cost account auditing standards. And 104 is going to be knowledge of business. What is the name? Knowledge of business. Next point, a cost auditing standard is relevant to the audit when the cost auditing standard is in effect and the circumstances addressed where the cost audit standard exists. The cost auditor shall have an understanding of entire text of cost auditing standards. इसीलिए हम लोग एक एक word पढ़ रहे हैं so that you can understand the entire text which is written in the cost auditing standards, including its application and other explanatory material to understand its what objective and to apply its what requirement. So actually ये standard is not something which you should learn. 103. 103 is telling you what you need to do in 101, 102 and 104 actually. So that is why the name of this standard is conducting the audit as per the cost auditing standards. Next one. Cost auditors shall not represent compliance with the cost auditing standards in the cost auditor's report unless the auditor has complied fully with all the cost auditing standards relevant to the audit. अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ. जैसे अपने यहाँ पे जो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में
there is one paragraph called auditor's responsibility para. Which para? Auditor's responsibility paragraph में क्या होता है? वो इस specifically mention कि I have done the audit as per standards on auditing. But this rule is not applicable to cost audit. They are saying that कि cost auditor till the time should not refer that he has followed the cost auditing standards till the time he has not used it in doing the audit. If you have not done documentation, if you have not acquired the knowledge of client's business, and if you have not done the planning, then do not quote that standard in your report कि you have done that. So it is not a formality. Why do we do in financial audit? क्योंकि in the financial audit में number of standards are more. So whether we want or not, 1 or 2 or 10 standards automatically will be implied. Here you only have how many auditing standards? 4. So if you have used them, then only quote it in your report. But if you have not used them, then do not quote them in your report. Read the sentence again. 5.4. Cost auditor shall not represent compliance with the cost auditing standard in his cost auditor's report unless the auditor has complied fully with all of the cost auditing standards relevant to the audit. If you have not fully complied with that, then do not quote in your report that you have used the cost auditing standards, right? Next point. In exceptional cases, the cost auditor may judge it necessary to depart from relevant requirement in the cost accounting auditing standard. In such circumstance, auditor shall perform alternative audit procedures to achieve the aim of that requirement. ये लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत सिंपल सी लाइन है. This line says that कि let's say for example the situation arises, whatever the standard is saying, you applied it, but unfortunately you did not get the results. So whatever you want to apply, that is not mentioned in what? Standard. It means when you applied the standard, you did not get the results. But what you want to apply, that is not written in the standard. It means you want to do something on your own. So in that case, you can do, but only in the which circumstances? Exceptional. Not always. So what they are saying that कि sometimes you want to depart from the standard. Let's say for example, हमने बोला था कि as per SA 102, you have to preserve your audit documentation for how many years? But unfortunately, you are unable to maintain it. तो वो एक exceptional situation होनी चाहिए under which you can't apply the cost auditing standards. But if you can apply it in the normal circumstance. Now read this whole sentence. In exceptional circumstances, the cost auditor may judge it necessary to, what is this word? Depart from a relevant requirement in cost auditing standard. In such circumstance, auditor shall perform alternative audit procedures to achieve the aim of that requirement. अगर आपको standard जो बोल, like say for example, standard is saying that कि do this, but if you do that, you are not getting the results. But you are doing something opposite to that. With that, you are getting the result. But what you are doing is not mentioned in the standard. So in the exceptional circumstances, you can go away from your standard, but you have to document it in writing कि why did you go away from the standard. Did you get the point? जैसे मैंने तुम्हें simple answer बताया था कि generally inventory we should physically verify it. हम लोगों को client के गोडाउन में जाना चाहिए, inventory physically verify करनी चाहिए. But did I tell you the exceptional situation? What if that inventory is lying in a which situation? Life threatening situation. उस केस में आपको क्या करना चाहिए? So please tell me what you will write in your audit report. As per the requirement of the standard, I should have gone and physically verify. But in the exceptional situation, as the industry lying in the which area? Naxal area or terrorist area, being a life threatening situation, instead of going there, I thought to take a what? WR. तो ये आपको document करके लिखना पड़ेगा. क्योंकि in the peer review or quality review, they may ask you the reason कि why you didn't do the thing which is written in what? Standard. And why you did the thing which is not written in standard. What is the reason behind that? That is the reason only in which circumstances? Exceptional circumstances. You can depart from what is written in the standard. Did you understand what I said? Next point. Cost auditor shall plan and perform an audit with an attitude of ये क्या लिखा है? Ticism, recognizing the circumstances may exist that cause a cost with the attitude of criticism होगा ये. बताओ आधे वर्ड खा लिया उन्होंने. Criticism. अच्छा ये बताओ, all the financial statement, all the cost statements are free from Roman or they are not free from Roman?
Should we always expect that ki client is 100% genuine, or little bit of errors and frauds might be there? That's what they're saying. Read this point again. Auditor shall plan and perform an audit with an attitude of criticism, recognizing that circumstances may exist that cause the cost statements to be materially misstated. हो सकता है कि वहां पे frauds and errors हो, because no business runs without any frauds and errors. थोड़े बहुत तो नॉन कंप्लायंसेस एवरी बिजनेस में होते हैं. तो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल बिजनेस यू विल सी इन योर लाइफ विच इज 100% क्लीन. Are you getting the point? Next point. Auditors shall obtain SAAE. What is SAAE? क्योंकि अच्छा ये मेरे को बताओ, आपको एविडेंस चाहिए क्यों? टू ड्रॉ व्हाट? रीजनेबल काउंट. क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ ही नहीं है, हाउ यू कैन से दैट क्लाइंट इज रॉन्ग और क्लाइंट इज राइट? अगर आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियन देनी है कि whether the client is right or client is wrong, you need to have something in your pocket. That something in your pocket is known as evidence, or that evidence must be sufficient and appropriate. What do you mean by sufficiency? Quantity wise. Sufficiency means quantity wise. Appropriateness means quality wise. तो अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं, आप क्लाइंट का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस चेक कर रहे थे, तो विच इज द बेस्ट मेथड? What the client is telling you, this is my balance, or what you can obtain from the bank statement? यहां पे आपकी क्वालिटी किसकी बेस्ट है? बैंक स्टेटमेंट. क्यों? दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स? एक्सटर्नल. एंड टोल्ड बाय द क्लाइंट इज व्हाट? इंटरनल सोर्स. चलो एक और एग्जांपल देते हैं. अगर अपन डेटर्स को वेरीफाई कर रहे हैं, मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो लेजर्स विद द क्लाइंट इज गिविंग, और आई शुड बी अलाउड टू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद देम एंड टेक द कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द डेटर्स. विच वन इज बेटर? कंफर्मेशन लेटर. अगेन व्हाट इज बेटर? सोर्स. तो उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएटनेस. नॉट ओनली क्वांटिटी वाइज, our quality wise evidence should also be good. Next one. Auditor shall exercise what? Professional judgment in planning and performing the audit. Let me ask you a very simple thing. Internal control system is very poor. What should be your sample size? तो ये किसने आंसर दिया? Your professional judgment. तो throughout the audit 90% of the cases में what we use is not mathematics. What we use is our professional judgment. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वीक. हमने रोमम इज हाई, सैंपल साइज को क्या कर दिया? हायर. आई नीड 100% इंश्योरेंस, सैंपल साइज को क्या कर दिया? इंक्रीज. आई नीड नॉर्मल इंश्योरेंस, लो. IR इंटू CR इज हायर, डिटेक्शन रिस्क इज व्हाट? लोअर. ये हमने पूरे डेवलप कर देना विद द हेल्प ऑफ आवर विच जजमेंट? प्रोफेशनल जजमेंट. Cost auditor shall determine that cost reporting framework followed by the management in preparing cost statement is in respect with what? Companies Act and rules prescribed thereunder. देखो सर, ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपनी को ऑडिट करते हो तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट ही शुड फॉलो विच एक्ट? कंपनीज एक्ट. और अगर वो बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस एक्ट. और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट एज वेल एज सेबी एक्ट. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट. Cost auditors shall not be required to perform audit procedures regarding the entity's compliance with laws and regulation governing cost audit in the absence of identified or suspected non-compliance. वो क्या बोल रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है, laws and regulations are not my responsibility. चलो मैं दो तीन क्वेश्चन पूछता हूं. Detection of frauds and error is whose responsibility? Management or auditor? Auditor's responsibility is to detect it or to express an opinion? And laws and regulations following is also whose responsibility? Management. Until and unless some non-compliance is coming in front of my eyes, then only I will ask some queries to my client. Till the time everything is going smooth, I do not have to poke my nose in the client's work thinking that, sir, आपने ये follow किया क्या? आपने GST returns file करेगा? If you see that GST returns are not filed properly while doing an audit, then only in the case of suspected non-compliances, you should raise the issue. Otherwise, you should not raise the issue anything, because you are only coming for 15 to 20 days. You are not allowed to poke your nose in everything. Read the point again. Cost auditors shall not be required to perform audit procedure regarding entities' compliance with laws and regulation governing the cost audit. भाई वो उनकी responsibility है. In the absence of identified or suspected non-compliances only, you should ask them. अगर आपको दिख गया फ्रॉड या एरर, आपको दिख गया नॉन कंप्लायंस, देन यू शुड आस्क देम. टिल दैट टाइम यू शुड नॉट पोक योर नोज. अदरवाइज दे विल सिंपली से, सर यू आर एन ऑडिटर, डू योर ऑडिट, टर्न अराउंड एंड पो करके निकल जाओ.
Why are you putting your nose in our work? If an objective is in a relevant cost accounting standard cannot be achieved, auditor shall evaluate whether this prevents the auditor from achieving the overall objectives of the auditor and thereby requires auditor in accordance with cost accounting standards to modify the which report? Auditor's report. So they are saying that ki, let's say for example, while doing the audit, you wanted to do something and you know that it is possible, but the client is not allowing you to do that. What can be the possibility in that? Please tell me. Why the client is not allowing you to do something which you want to do? It means either there is a fraud or error. अब आप force तो कर नहीं सकते, or you can't fight with your client कि आप ये तो बोल नहीं सकते नहीं मैं तो तेरे गोडाउन में जाऊंगा ही जाऊंगा. He is simply saying sir I cannot take you to my godown. Then in that case आपके पास क्या ऑप्शन है? Did you get an evidence or you don't get an evidence? It means you will give a which opinion? Disclaimer. And disclaimer is nothing but called what? Modify. अब कब एक मैं रूल बताता हूं, ध्यान से सुनना. Sometimes you will be confused कि when should I give qualified, when should I give adverse, or when should I give what? Disclaimer. If you are still getting confused and you're not able to come to the exact conclusion, better to use this word. What is this word? Modify. Modify includes which two? Which three? Qualified, adverse, disclaimer. Let the examiner be in the guessing situation now. कि what you wanted to tell. It's a very simple trick. Are you getting it? कई बार उन्हें पूछते हैं कि should you give right opinion or wrong opinion? Should you give adverse, qualified? And if you are getting confused, कि should I give qualified, adverse or disclaimer? Better to use a word called what? Modify. In that case, let him be in the which situation? Guessing situation. Next one, application guidance, audit and ethics. अच्छा ये बताओ ethics और audit का क्या relationship है? वही रिलेशनशिप है जो हमने प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा. व्हाट आर द 5 एथिक्स यू हैव टू फॉलो? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. कैन यू एक्सप्लेन वन बाय वन? व्हाट वाज आई? इंटीग्रिटी में क्या था? यू शुड बी ऑनेस्ट, सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑब्जेक्टिविटी में यू शुड ऑलवेज बी इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड. कॉन्फिडेंशियलिटी में without the prior permission of the client or unless there is a question of law, you are always allowed to maintain what? Confidentiality. You have to keep your mouth shut. Professional due care mein, should you do everything with the care or negligence? Care. And what do you mean by professional behavior mein? Do not do anything which will provide any disrespect to the institution. उसे बोलते professional behavior. This is a relationship of what with what? Auditing and ethics. एक बार पढ़ लो so that you will see that we have done that. See, cost auditor should comply with the relevant ethical requirements as per the code of ethics issued by Cost of Accountants of India. This code establishes fundamental principles of professional ethics relevant to the auditor while conducting an audit and provide a conceptual framework for applying these principles. Fundamental principle within which the auditor is required to be complied. The first one is what? Independence, integrity, objectivity, competence, due care, confidentiality and the professional cut. In the case of an audit engagement, it is in public interest that auditor should be independent of entity. What do you mean by independent? Should you accept your client if you are financially interested? Suppose आपके वाइजैक स्टील प्लांट के 20,000 shares आपके पास है and they appointed you as a statutory auditor. First of all, to tell me, are you qualified or disqualified? You should accept or should not? Or suppose the MD of that company is your wife or a husband. You should or should not? Because that clearly impacts your which quality? Independence. That is what they are saying. For example, provisions of services of the maintenance of cost record, design and implementation of cost system, internal audit are considered to erode what? Independence. मेरे को ये बताओ, हम लोग ICS में involved होते हैं या ICS को check करते हैं? But if you are involved in making that, are you independent or you are dependent? Can internal auditor be the external auditor of the same company? Why? इसका major reason क्या है? Why internal auditor should not be the external of the same company? क्योंकि internal is a puppet of whom? Management. And external is towards whom? Users. तो दोनों के objectives are different, independence levels are different, objectivity is also what? Different. Read the last example again. If you are involved in the provision of services for maintenance, you are involved in the maintenance, you are involved in designing and implementation of cost systems and which audit? Internal audit, considered to erode your what? Independence.
तो you should not be involved in that. Rather, you should be involved in examining them. Clear है? तो this is what do you mean by, ये बहुत ही simple सा standard है. There's no nothing particular we have to learn about this standard, क्योंकि this standard is a mix of all the three. Conduct of audit. Cost auditing standards provides the standards for the cost auditors work in fulfilling the overall objectives of cost auditor. Cost auditing standards deal with general responsibilities of the cost auditor as well as cost auditors further consideration. अच्छा मेरे को ये बताओ इन्हें standards क्यों बोलते हैं? Why do we call them as standards? And what is the difference between standards and guidance notes? पहले तो ये बताओ इन्हें standards क्यों बोलते हैं? What is the reason they are called standards? हाँ भाई, why do we call them as standards? Cost accounting, cost auditing standards क्यों बोलते हैं अपन? Why do we call them as standards? Why are they not called guidance notes? हाँ जी, आप बताओ क्या बोल रहे हो? कंपल्शन. यस, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट में मेजर डिफरेंस क्या होता है? गाइडेंस नोट्स आर रेकमेंडरी इन नेचर. व्हाट इन नेचर? रेकमेंडरी. इंस्टीट्यूट आपको रेकमेंड करता है कि इफ यू आर इन दिस सिचुएशन वी गाइड यू टू फॉलो दिस. बट वंस द गाइडेंस नोट्स बिकम्स व्हाट? स्टैंडर्ड, इट बिकम्स कंपल्सरी इन नेचर. व्हाट इन नेचर? कंपल्सरी. तो ये बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया के कॉस्ट ऑडिटर्स, आइदर यू आर डूइंग द कॉस्ट ऑडिट इन दिस स्टेट or in another state, make sure that everyone has to follow the same cost auditing standards. Did you get the point? That's why they are called cost auditing standards, and that is what is being given कि your conduct of audit should be as per the cost auditing standards. Second one पढ़ो. In performing an audit, cost auditor may be required to comply with the legal and regulatory requirements in addition to what? Cost auditing standards. What do you mean by this line? पहले तो ये बताओ, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो हमें पता चल गया कि 4 हैं, 101, 102, 103 एंड 104 को फॉलो करना है. इसके साथ आपकी और क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है? प्लीज टेल मी हाउ यू शुड बी अपॉइंटेड बाय द कंपनीज. कंपनीज का कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बाय पासिंग अ विच रेजोल्यूशन? वो रेजोल्यूशन विद इन, वो कहां पे लिखा हुआ है? वो स्टैंडर्ड में लिखा है या सेक्शन में लिखा है? सेक्शन क्या है? लॉ. So not only you have to follow CAS, you have to follow the applicable laws and regulation. When you should have reported? Within 180 days from the end of what? Financial year. In which form number? तो ये आपके क्या है? ये आपके legal and regulatory requirements है. So they are saying that while doing the cost audit, not only the cost auditing standards you have to follow the cost auditing standards along with your legal and regulatory requirements. In such cases, in addition to complying with each and every cost auditing standard to the cost audit, it may be necessary for the cost auditor to perform additional audit procedures in order to comply with legislative and regulatory requirement. The cost auditing standards do not override regulations that govern the audit process. They are saying that your 4 cost auditing standards will always be in line with लॉज एंड रेगुलेशंस. जैसे मान लो एक कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता जिसमें लिखा होता है कि कॉस्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड विद इन 30 डेज, और लॉ क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 180 डेज. व्हाट विल बी दिस कॉल्ड? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी? दे आर सेइंग दैट इट कैन नेवर हैपन इन कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिटिंग में कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर फॉलोइंग इन लाइन विद व्हाट? लॉज एंड रेगुलेशन. दे कैन नेवर गो inconsistent with the laws and regulation. Read the last line again. The cost auditing standards do not override law or regulation that govern what? Auditing process. जैसे कभी भी आप देख लो, कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट में भी कभी फाइट नहीं होती. और कभी आपने assume, have you seen the word this notwithstanding? Have you seen this word somewhere? तो मालूम है ये वर्ड क्यों लिखा जाता है? What is the reason behind using this word notwithstanding? Yes, इसमें जैसे मान लो अगर अपन सेबी एक्ट की बात करते हैं, सेबी क्या बोलता है कि भैया 25% ऑफ योर इशू प्राइस मस्ट बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी ओनली. मतलब अगर आप शेयर्स को अप्लाई करते हो तो 25% एट द टाइम ऑफ व्हाट?
एप्लीकेशन आना चाहिए. रिमेनिंग 75% you can recover in the next 12 months in the form of final call, first call, second call, allotment money. बट कंपनी से क्या बोलता है 5%. कितना बोल रहा हो ना 5%. अब सेबी 25 बोल रहा है, कंपनी से कितना बोल रहा है 5. दोनों के अंदर हो रही है फाइट. अब यहां पे एक रूल आता है, उसे हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. व्हाट डू वी कॉल इट एज हार्मोनियस. उसके कारण ये वर्ड आया बीच में. अब अगर आप कभी सेबी एक्ट पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा होगा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट, application money should be 25% of the issue price. And the same line companies act will use. What will be used in the companies act? Notwithstanding anything contained in SEBI act, application price would be what? 5. तो ये notwithstanding का मतलब क्या होता है कि you are reading now companies act, तो don't follow SEBI act. If you are doing what SEBI act, then don't follow company. अब बताओ मैं listed company हूं, मैं क्या फॉलो करूं? बट मैं तो कंपनी भी हूं. लेकिन वेन एवर देयर इज अ फाइट बिटवीन द जनरल एंड स्पेशल एक्ट, स्पेशल ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल. अब मेरे को बताओ सेबी किसको कवर करता है, ऑल कंपनीज को या ओनली लिस्टेड कंपनीज? तो स्पेशल एक्ट है. सेबी इज अ विच एक्ट? स्पेशल. कंपनीज एक्ट इज अ जनरल. वेन एवर देयर इज अ फाइट बिटवीन द टू, जनरल ऑलवेज गेट्स अंडर वर्ड स्पेशल, स्पेशल प्रिवेल्स ओवर जनरल. तो मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो लिस्टेड कंपनी है, वो क्या फॉलो करती होंगी? सेबी. क्योंकि जैसे आप लिस्टेड बन जाते हो यू डोंट हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट, यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग सेबी एक्ट. उस केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं व्हाट? नॉटविथस्टैंडिंग. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स द लॉ मेकर्स ट्राई दैट कि वन थिंग शुड नॉट गो इनकंसिस्टेंट विद व्हाट अनदर थिंग. और अगर जा भी रही है तो ये वर्ड यूज कर देंगे. व्हाट इज दिस वर्ड? नॉटविथस्टैंडिंग. नेक्स्ट पॉइंट. The form of the cost auditor's opinion will depend upon the applicable cost reporting framework and any applicable law and regulations such as Companies Act and rules prescribed thereunder. पहले तो अपना फॉर्म नंबर बताओ. What is CRA 1, 2, 3, 4? 1 is cost records. 2 आपका आज टेस्ट है क्या? आज है सिलेबस. When do you have an exam? I think उसका पोर्शन मैंने प्रोफेशनल एथिक्स एंड सीआरए रूल्स ही दिया हुआ. ठीक है ना, सीआरए रूल्स विदाउट एनी प्रैक्टिकल्स. तो व्हाट इज सीआरए 3? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. देन व्हाट इज सीआरए 4? व्हेन यू सेंड द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद बोर्ड्स कमेंट्स टू होम? सेंट्रल गवर्नमेंट. अच्छा ये कभी वर्ड सुना है? बताना क्या होता है ये? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. इट इज अ विच माइंड? तो एक काम करो, सस्पिशियस माइंड और क्वेश्चनिंग माइंड में डिफरेंस क्या होता है वो बताओ. एन ऑडिटर शुड हैव अ सस्पिशियस माइंड और एन ऑडिटर शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड. वही तो पूछ रहा हूं डिफरेंस. सस्पिशियस मींस, तुम्हें याद है मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट डे को आपको बताया था कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या होता है. Investigation starts with a which mind? Suspicious mind. Auditing starts with a questioning mind. Why professional skepticism is not called suspicious mind? Because you don't know what your client has done. You are entering the client's place when? After the end of the financial. So do you know that what frauds and errors have taken place? Or you will come to know. So you should never start your audit with a which mind? Suspicious mind. But you can always start your audit with a क्वेश्चनिंग माइंड, बट ओनली व्हेन द नीड अराइजेस. जैसे से फॉर एग्जांपल मैं उनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर रहा था. कॉस्ट रिकॉर्ड एग्जामिन करते करते मेरे को ये देखा, मैंने कहा यार 10,000 आवर्स इज द कैपेसिटी ऑफ वन मशीनरी, बट दे आर यूजिंग इट ओनली फॉर 6,000 आवर्स एंड आफ्टर दैट दे डिस्पोज. मेरे को एक क्वेश्चन आया कि व्हाई यू डिडंट यूज द मशीनरी फॉर व्हाट 10,000 आवर्स. आई एम नॉट सेइंग आई गॉट द सस्पिशन, आई गॉट अ डाउट. मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैंने कहा सर व्हाट इज द रीजन. उन्होंने बोल रहा सर वी रिप्लेस द ओल्ड विद द व्हाट न्यू. हमें न्यू टेक्नोलॉजी मिल गई थी, तो दैट्स द रीजन वी थॉट दैट कि लेट्स रिप्लेस द ओल्ड मशीनरी विद द न्यू मशीनरी. अब बताओ माय डाउट गॉट रिजॉल्व्ड. इट मींस इट वाज नॉट अ सस्पिशन, इट वाज अ. बट व्हेन आई सॉ दैट कि आई एम ट्राइंग टू आस्क देम 10 times, आई आस्क देम कि आई वांट टू गो टू योर गोडाउन, गो टू योर गोडाउन, गो टू योर गोडाउन, चेक योर स्टॉक इन हैंड, एवरीथिंग. And every time they are saying, sir, कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे. Now, is it a questioning mind or it is a suspicious mind? क्योंकि 10 times you asked and they're not giving you the reliable,
यू नो इन आंसर और इंफॉर्मेशन ऑन दैट. तो कभी भी याद रख लो, यू शुड फर्स्ट स्टार्ट योर ऑडिट विद व्हाट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. दैट इज कॉल्ड विच माइंड? क्वेश्चनिंग माइंड. In case the need arises, turn your questioning mind into what? Suspicious mind. अगर फिर भी आपको वो एविडेंस नहीं देते, if they're not providing the evidence, then only you should change from questioning mind to the suspicious. So never ever say कि professional skepticism is a which mind? Suspicious. It is always a which mind? Questioning mind. तो कहने का मतलब होता है be alert throughout the audit. What is the meaning? Be alert throughout the. उसे बोलते हैं हम लोग which mind? Questioning mind, which is also known as professional skepticism, which is also known as skeptical mind. Which mind? Skeptical. अभी पढ़ो क्या लिखा? An attitude. ये टीसिज्म करके देखो एक बार, वर्ड है क्या? इतनी बार मिस्टेक तो नहीं हो सकती. ऑप्टिसिज्म, क्रिटिसिज्म, कुछ देखो वर्ड. टीसिज्म कोई वर्ड है क्या? नॉट अ वर्ड. तो टीसिज्म ये बार बार क्यों लिखते हैं? स्केप्टिसिज्म है. अरे यार, स्केप लगाना भूल गए नो. व्हाट इज दिस वर्ड? Skepticism. An attitude of skepticism means cost auditor makes a which assessment? Critical. Skepticism का मतलब देखना वही है ना, questioning mind. हाँ, it is not टीसिज्म, it is skepticism. An attitude of skepticism means the cost auditor makes a critical assessment with the which mind? Questioning mind of the validity of audit evidence obtained, and be alert to the which evidence? Audit evidence that contradicts or brings into question of reliability of documents and response to the inquiries and other information obtained from the management and TCW. चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ वन क्लाइंट. आपको कंटिंजेंट लाइबिलिटीज दिखे. क्या दिखे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. यू वेंट टू द मैनेजमेंट. आपने मैनेजमेंट को डायरेक्टली जाके पूछा कि सर these 2-3 cases have been filed against you. What are the chances of winning of these cases? Management say, what these cases are? We are definitely going to win. Just that judge is not available. That's why they are still our which liabilities? Contingent. The moment judge will come, he will give the case in our favor and we will be able to win the case. So no worries about that. Okay. Should I believe them? I'm not saying that they are wrong. I'm saying that don't you think that you need to cross verify it? Yes. आप उनके एडवोकेट्स के पास गए. अब आप उनके एडवोकेट्स के पास गए, उन्होंने बोला सर ये केसेस में व्हाट इज द जनरल आउटपुट. तो दे सेज दैट सर दीस केसेस वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट, इट्स जस्ट दैट जज डिसीजन इज पेंडिंग. अब मेरे को बताओ, व्हाट द मैनेजमेंट वाज टेलिंग यू? वी आर गोइंग टू विन द केस. व्हाट द लीगल एक्सपर्ट पैनल इज सेइंग? इज इट मैचिंग ऑफ थॉट्स और मिसमैचिंग? अब तुम्हारे दिमाग में क्या होगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. इसको बोलते क्वेश्चनिंग माइंड. When what you have obtained is not matching with what they are saying. Are you understanding the point? What I'm saying? When what you have obtained is not matching with what they are saying. मतलब कुछ तो MM है. What is MM? Material mistake. या तो वो fraud है या error है. तो सीधा अपने client के पास जाओ, उसके बाद जाओ TCWG के पास जाओ and obtain the FAP. What is FAP? Further audit procedure. उसे बोलते professional skepticism. Now read this point again. Read the first 4 lines. Attitude of skepticism means cost auditor makes a critical assessment with questioning mind of the validity of audit evidence obtained and be alert to the audit evidence that contradicts or brings into question the reliability of documents and response to the inquiries and other informations obtained from management and TCW. अगर आपको लगता है कि आपके पास जो एविडेंस है or what they are saying is matching, it's cool. But if it is not matching, it means you definitely have to raise a question. And raising the question is called which attitude? Skepticism mind. Which mind? Skepticism mind. Now, attitude of skepticism is necessary throughout the cost audit process for the auditor to reduce the risk of what? Overlooking unusual circumstances. चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं. What is the difference between bad debt and bad debt recovery? What do you mean by bad debt and bad debt recovery? No one will tell. You tell now. What do you mean by bad debt and bad debt recovery? पहले bad debt.
Bad debt means what? Recoverable debtors or irrecoverable? Irrecoverable. Dead money. That is your loss or not? But what do you mean by bad debt recovery? Yes. So he's like by mistake or by God's grace, he came to your office and gave you the money, which you already declared it as what? Bad debt. So please tell me, does it happen oftenly? Is it a recurring item or non-recurring? Should you be skeptical in this case? Yes. अब मैं तुम्हें बताता हूं ऐसे क्यों होना चाहिए. देखो ध्यान से मेरे को बताना लॉजिकली एम आई करेक्ट और नॉट. जब आपने इसे बैड डेट डिक्लेयर किया था, व्हेन यू डिक्लेयर्ड इट एज अ बैड डेट, डिड योर प्रॉफिट्स इंक्रीज और डिक्रीज्ड? डिक्रीज. इट मींस यू अवॉइडेड सम टैक्स. एम आई करेक्ट? अब ये जब बैड डेट रिकवरी हुआ तो इज इट योर एक्सपेंडिचर और इनकम? It means your unnecessarily your net profits are getting what? Increase. Sometimes intentionally company increases it by adding it in the credit side to show higher profits. To show the which profits? उसे हम लोग विंडो ड्रेसिंग फ्रॉड बोलते हैं. What do we call it as? अब इसका अकाउंटिंग लॉजिक क्या है कि बैड डेट रिड्यूस योर टैक्सेस, देयरफॉर बैड डेट रिकवरी शुड इंक्रीज योर टैक्स. इन दैट ईयर यू टुक द टैक्स बेनिफिट, but in this year you should pay the tax क्योंकि debit and credit should match. But some companies, if they show bad debt recovery only, that is wrong because bad debt recovery does not take place oftenly. और आपने AS-5 में पढ़ा हुआ है कि यहां पे इसे exceptional item का heading देना पड़ेगा. What is heading? Exceptional. Separate disclosure is required. यहां पे आके ऑडिटर का कौन सा माइंड क्लिक होना चाहिए? Professional skeptical mind. Did you get the point? So it is not that ki there are some areas. What they're trying to tell that you should be skeptical throughout the audit. Read the point number 2 again. An attitude of skepticism is necessary throughout the cost audit process for the auditor to reduce the risk of what? Overlooking which transactions? Unusual. अब ये bad debt recovery usual था या unusual था? Unusual था. तो कभी बार में सबसे ज्यादा frauds and error के chances होते हैं non-recurring items में. Which items? Non-recurring. अब चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं सो दैट यू विल गेट अ मोर क्लैरिटी. ये कंपनी है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं पीएनएल में और बहुत सारे इनकम्स हैं. इनकम्स में यहां पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 35 करोड़ और यहां पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 16.5 करोड़. ये आपका पीएनएल है. लुक एट दिस पीएनएल वेरी केयरफुली एंड प्लीज टेल मी, इज दिस कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग? क्यों लॉस मेकिंग? अगर अपन इंश्योरेंस क्लेम को अगर क्रेडिट साइड से निकाल दें तो एक्चुअली दिस कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी. एंड प्लीज टेल मी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज योर रेकरिंग इनकम और नॉन रेकरिंग? हियर यू नीड टू हैव अ विच माइंड? स्केप्टिकल माइंड. ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लाइंट से पूछने चाहिए. कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ और ऐसा. इसका मतलब वो जाके शेयर होल्डर्स को क्या बोल रहा है कि आई एम अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. आई एम अ विच कंपनी? बट एक्चुअली दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग. क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू वोंट बी हैविंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेन. तो नेक्स्ट ईयर आपकी सडनली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विल टर्न इनटू अ लॉस मेकिंग. दैट इज कॉल्ड. तो यू विल आस्क द क्लाइंट व्हाट यू हैव डन टू शो दिस टू योर यूजर्स. आपने नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ा. व्हाट डिड यू रीड? नोट्स टू अकाउंट. ही हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनीथिंग अबाउट द इंश्योरेंस क्लेम. इट मींस ही इज डायरेक्टली डूइंग द फ्रॉड विद द शेयर होल्डर्स बाय सेइंग दैट कि आई एम अ प्रॉफिटेबल कंपनी. If you're a genuine company, what you should have done? Notes to accounts में एक disclosure देना था कि we would like to draw your attention on insurance claim. This is received. That's the reason we are a which company? Profit making. Actually, the current year losses are almost 18.5 crores. How many crores? 18.5. वो तो insurance claim मिल गया, इसलिए 18.5 crores turned into what? 16.5 crores of what? Profit. Is it my responsibility or companies? But company is not doing that. So that is the reason you have to be skeptical throughout the audit. अब समझ में आया what do you mean by professional skepticism? Next point. For overgeneralizing when drawing conclusion from the cost audit observation and of using faulty assumption in determining nature, timing, and extent of cost audit procedures, evaluating the results thereof. When making inquiries and performing other cost audit procedures, cost auditors should not be satisfied with the less than persuasive audit evidence based on belief that management and TCWG are honest and have what? Integrity. When do you say that the management is honest? Without disclosure or with disclosure? तब आप बोल सकते हो कि ठीक है, management is showing profits,
but at the same point of time, it is also telling to its users कि don't think that it is profit making company, it is actually a loss making company. उस केस में आप बोल सकते हो management is right, but if the management is not doing that disclosure, it means management is hiding the fraud, right? Accordingly, representations from the management are not substitute for obtaining sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on the basis of which cost audit or opinion is given. अच्छा ये बताओ WRL मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है WRL? It should be a first option or last option. अगर आपको याद हो मैंने आपको एक FD वाला क्वेश्चन भी पूछा था कि FDs are there and it is biometric attendance locker is there but they gave you WRL, you accepted it. But were you right in that case or wrong? What you should have done? Duplicate FDs. So till the time your all the courses of action, मान लो plan A did not work, go for plan B. Did not work, C. Did not work, D. Suppose all the plans failed. Last option should always be what? WRL. Up padho. What is the last line? He's saying. Accordingly, yahan se padho. Accordingly, representations from the management are not substitute for obtaining sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on the base the cost audit opinion is drawn. So you should never draw the opinion on the basis of WRL. यहाँ तक समझ में आया? Did you get the point? अब बताओ sir, why WRL is the last option? अच्छा 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 मैंने वो पूछे नहीं. I didn't ask you what is WRL. I asked you why WRL should be the last option. Again you are giving me the answer what is WRL. What I am asking is different. Why WRL is not a substitute of SAAE? पहले तो बताओ SAAE क्या है? वो तुम्हें नहीं मिला, तुमने क्या किया? WRL ले लिया, तुम अपने ऑफिस में ओपिनियन ड्रॉ कर दी. इज इट राइट और रॉन्ग? भाई मैं वो पूछ ही नहीं रहा. आई एम नॉट आस्किंग यू. तुम मेरे को क्या बोल रहे हो कि इफ वी डू नॉट डू ऑडिट ऑन अवर ओन, इफ यू कांट डू, वी कैन टेक द WRL. आई एम सेइंग from the point where you are stopping. I am saying, okay, I received WRL. I went to my office and drawn the opinion on the same. My question is, am I right or wrong in this case as an auditor? क्योंकि उस टाइम पे भाई साहब सुन ही नहीं रहे थे मैं क्या बोल रहा था, तब तो मुंह से कलियां निकल रही थी, है ना? WRL is your last option. Which option? Last. And you cannot express the opinion on the basis of WRL because it is not sufficient and appropriate enough, neither quantity wise nor quality wise. क्योंकि अगर आप WRL के बेस पे ओपिनियन दे रहे हो तो यू आर अ रॉन्ग कॉस्ट ऑडिटर. बेटर डिस्क्लेम योर ओपिनियन, बट इट्स नॉट करेक्ट टू गिव द ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? WRL. इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो आप सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट के लिए लेते हो. Otherwise, you can never express an opinion on the basis of what? WRL. It is neither sufficient nor appropriate. ये हमेशा याद रखना. This is what do you mean by with skepticism? Professional. वही तो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं. कई बार क्लाइंट आपको WRL दे देता है, ले लो सर ऑडिट. अब उस टाइम पे उसने बोल दिया FD का WRL दे दिया and you express the opinion. Were you right? Or you should have obtained duplicate FD? Duplicate FD. वैसे मान लो उन्होंने बोला सर इन्वेंट्री वाइजैक में पड़ी है सर, गोडाउन में कौन जाएगा? उन्होंने बोला चलो मेरे साथ, बुक मी टिकट, आई वुड लाइक टू गो, वुड लाइक टू विजिट. एक रूल बताता हूं लाइफ में, वो हमेशा याद रखना. डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट शुड नेवर बी योर एक्सक्यूजेस. व्हाट आर द थ्री थिंग्स? आप कभी ये नहीं बोलोगे क्लाइंट को कि मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा. यू शुड नेवर स्किप एनीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट. कॉस्ट आपको चिंता नहीं करना है. आपकी जो बुकिंग ऑफ टिकट होगी, लॉजिंग होगा, फूडिंग होगा, हु विल टेक केयर ऑफ दैट? क्लाइंट. क्योंकि ही कैन नेवर स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू. कॉस्ट आपको टेंशन नहीं लेना है. टाइम आपके पास नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम. बट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम, यू कैन नॉट से दैट सर टाइम नहीं है इसलिए इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर चेक करेंगे, इस साल WRL दे दो, लेट मी साइन इट. नो, यू आर रॉन्ग इन दैट.
Difficulty, nothing is difficult for you when you are a cost auditor. You should never be a lazy person just because you don't have a time. It is looking difficult and it is looking costly. क्योंकि all three things are not the barriers of doing the cost audit. ये हमेशा याद रखना. अगर ये तीन principles के ऊपर चलोगे ना, then in that case you will never fail in giving the right opinion. Sir, time ने एक काम करो, WRL दे दो. You are wrong in that, not client. You should never ask WRL. WRL you should only ask when the option or no option. No option as your last option. And moreover, even if you obtain the WRL, doesn't mean that you can express an opinion. Better to disclaim your opinion instead of expressing it. Clear? Done? Next point. Cost auditor conducting an audit in accordance with cost auditing standards obtain reasonable assurance that cost statements have taken as whole are free from material misstatement. Reasonable assurance is a concept relating to accumulation of audit evidences necessary for the auditor to calculate that there is no material misstatement in the cost statement taken as a whole. Reasonable assurance relates to whole audit process. How reasonable assurance is different from absolute assurance? क्योंकि जब अपन एब्सोल्यूट देते ना तो हम लोग टी एंड सी वर्ड यूज करते हैं. व्हाट इज अ वर्ड? ट्रू एंड करेक्ट. करेक्ट और फेयर में डिफरेंस पता क्या है? करेक्ट और फेयर में 100% और लेस देन 100%. लेस देन 100% इज नोन एज फेयर. और जब आप 100% श्योर होते हो, यू यूज अ वर्ड कॉल्ड करेक्ट. एंड वी नेवर यूज अ वर्ड करेक्ट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग हायर्ड टू गिव अ व्हाट? गारंटी. वी आर हायर्ड ओनली टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वी मेक अ यूज ऑफ विच टेस्टिंग. हम लोग हर एक आइटम को टेस्ट ही नहीं करते. तुम सोचो वाइजेक स्टील प्लांट के पूरे साल में कितने सेल्स इनवॉइसेस होते होंगे. इमेजिन करके देखो, थाउजेंड्स में. बट डू यू हैव दैट मच ऑफ टाइम टू डू द थाउजेंड्स वेरिफिकेशन और यू विल डू टेस्टिंग? तो बिकॉज ऑफ द रीजन नंबर 1, सैंपल टेस्टिंग. रीजन नंबर 2, inherent limitations of internal control system. Please tell me which company in India is having the world's best internal control system. You can't use the word best in that. चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं और मेरे को बताना हूं कि फ्रॉड एंड एरर कैन हैपन वेयर. ए कंपनी, बी फैक्ट्री, ए फैक्ट्री, बी फैक्ट्री. यहां पे एक ही बंदा गोडाउन का टेक केयर कर रहा है एंड हियर आर 4 डिफरेंट पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ व्हाट? गोडाउन. One person who is in the A factory is allowing the lorry, loading it, weighing it, exiting it. All 4 functions single person is doing. In the second case, all the 4 functions, 4 people are there. The one who is allowing the lorry to come inside is different, loading is different, weighing is different, exiting is different. Where the chances of frauds and errors are less. But can you say 0? No. मान लो ये चारों लोग मिले हुए हैं तो all the 4 मिले हुए मतलब collusion. Collusion का मतलब होता है they have joined the hands with each other. अब मेरे को बताओ which is more dangerous? B is more dangerous. And this is called inherent limitation of internal control system. Either you have more number of people or you have less number of people. What matters how honestly they work. If they are dishonest, na, having the 100 people for the 4 activities also is going to bring the frauds and error. उसे बोलते हैं inherent limitation of which system? For example, possibility of management overriding or collusion. And what is the third reason we give the reasonable assurance? The fact that most of the audit evidences are what in nature? Persuasive rather than what? क्योंकि audit is a post-mortem activity. It's a which activity? Audit कब होता है? और आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, limited. And due to the limited time, do you obtain the evidence on your own or you collect it from management? So something you collected from the management is known as what? Persuasive rather than conclusive. क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हर एक चीज आप खुद से देखो. आप सर सेल्स का रजिस्टर देना, सर परचेज का रजिस्टर देना, सर गोडाउन चलेंगे, स्टॉक रजिस्टर देना, ये किसने मेंटेन करे? ऑल दिस रजिस्टर मैनेजमेंट. तो दे आर व्हाट इन नेचर? Persuasive. Have you heard this word earlier? Persuasive word has come from the word called persuasion, to influence somebody. मैनेजमेंट हमेशा रेडी रहती है अपने टूल्स के साथ. उसे मालूम है ईयर एंड होने वाला है, कॉस्ट ऑडिटर आने वाला है, लेट मी मेक इट एवरी रेडी. इवन इफ यू नो दिस फैक्ट ऑल्सो, बट यू आर हेल्पलेस, यू कांट डू एनीथिंग. क्योंकि लाइक दिस कंपनी यू हैव 20 मोर टू टेक केयर ऑफ दैट. तो एवरीवेयर इफ यू विल स्टार्ट ऑब्टेनिंग कंक्लूसिव एविडेंसेस, दैट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग, एंड टाइम इज द ओनली बिगेस्ट कंस्ट्रेंट वी हैव इन अवर प्रोफेशन. तो मोस्ट ऑफ दीज आर द 3 reasons why we end up giving
Not why we do not give the which assurance? Absolute. That's the reason why we always give what? Reasonable assurance. What are the three reasons? Use of sampling, inherent limitations, and the fact that most of the evidences are what in nature? Persuasive rather than what? Conclusive. Okay. Also, the work undertaken by the cost auditor to form an audit opinion is pre-meted by judgment, in particular regarding gathering of audit evidence. For example, deciding the nature, time, and extent of what? Audit procedure, and drawing of the conclusion based on audit evidence gathered. For example, assessing the reasonableness of estimates made by the management in preparing the what? Cost audit. चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. What do you mean by provision for doubtful debt? ये क्या होता है? What do you mean by provision for doubtful debt? You are expecting these many bad debts may happen, but is it your accuracy or is it your estimation? You got your own answer. Estimations are not accurate. When their financial statements have some estimations, how you can expect that the audit will also be based upon accuracy? Are you getting the point? हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलते हैं कि मतलब हो सकता है कि ईयर एंड पे 7 करोड़ के बैड डेट हो जाए, तो हमने 8 करोड़ का प्रोविजन बना के रखा. प्रोविजंस का मतलब ही होता है मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, एंड समथिंग विच इज एस्टिमेट कैन नेवर बी व्हाट? एक्यूरेट. दैट्स द रीजन वी कैन नेवर गिव द विच एश्योरेंस? एब्सोल्यूट एश्योरेंस. हम लोग हमेशा, इसके बहुत सारे रीजन है एंड और भी रीजन है. फर्दर अदर लिमिटेशंस में अफेक्ट द परसुएसिवनेस ऑफ द एविडेंस अवेलेबल. व्हाट इज द फर्स्ट वन? Unusual circumstances which increase the risk of what? Material misstatement beyond that which would ordinarily be expected. अब let's say for example you thought that I will go to the client's place, first 10 days I will verify their books of accounts, this and that, and when you entered you came to know that income tax raid has happened, they seized all the books of accounts. अब बताओ, that is expected or unexpected? This can be the another reason why you can't give the which assurance. Absolute. What can be the another reason? Any indication that a material misstatement has occurred. Let's say for example you saw their sales. अच्छा मेरे को ये बताओ, what happens when the sales have happened? What happens to your inventory when the sales happen? Increases or decreases? Let's say for example from April 22 to Feb 23 you have made 900 crores of sales, but when you suddenly see the March it is 1900 crores. Are you able to see anything unusual here? तुम्हें 11 महीने लग गए 900 करोड़ बेचने में और तुम एक ही महीने में 1000 करोड़ बेच दिए. मतलब what you couldn't do in 11 months you are able to do it in 1 month. Is it falling in line or professional skepticism is coming from inside? Questioning mind. भाई ऐसे कैसे? How you will prove that कि this is fraud? अब इसको प्रूव कैसे करोगे? आप सिंपली जाओ गोडाउन में, उनका देखो फेब के रजिस्टर में कितना इन्वेंट्री था, और अगर वही सेम इन्वेंट्री मार्च में भी है, इसका मतलब ऑल दिस 1000 करोड़ इज नथिंग बट अ वर्ड बोगस सेल्स. इट इज कॉल्ड विच सेल्स? बोगस है. और ये हमने सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 1 में करा हुआ है. गो देयर, कंपनी ऑडिट सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 1 में हमने ये पॉइंट लिखा था. ये 6 पॉइंट्स लिखे थे, उनमें से सेकेंड पॉइंट 143 सबसेक्शन 1 ड्यूटी टू इंक्वायर में, whether the purchase and sales are mere book entries. बुक एंट्री मतलब क्या हुआ? एक्चुअल सेल्स हुआ ही नहीं, ये सिर्फ बुक्स के ऊपर सेल्स था. इसका मतलब दे आर इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस. विच वन? इन्फ्लेटेड मतलब इनवॉइस जनरेट कर दिया बट सेल नहीं किया, जस्ट टू शो टू द आउटसाइडर कि माई सेल्स हैव ग्रोन फ्रॉम 900 करोड़ टू 1900 करोड़. दिस इज ऑल्सो द रीजन, क्योंकि हर एक कंपनी में ये होता है. और द मोस्ट करप्टेड मंथ ऑफ एवरी कंपनी इज द मार्च मंथ. मोस्ट करप्टेड मंथ. सबसे ज्यादा फ्रॉड्स एंड एरर कौन से मंथ में होते हैं? क्योंकि पूरे 11 महीने वो सो रहे होते और 11 मंथ में उनको 12th मंथ में जाके रियलाइज होता है शिट, अप्रैल में तो लोन रिन्यूअल है और बैंक वुड लाइक टू सी माई 1500 करोड़ ऑफ सेल्स एंड व्हाट शुड आई डू? ड्यू टू दैट ये इसे हम लोग बोलते हैं FRF, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स. प्रेशर्स are something which induces you to do the fraud. हर एक कंपनी के फ्रॉड के 3 ही रीजन होते हैं, या तो प्रेशर, या अपॉर्चुनिटी, या रैशनलाइजेशन. अच्छा इमेजिन करो यू आर एन कैशियर इन अ बैंक और तुम्हारे ऊपर 2 कैमरास लगे एंड यू नो दैट बोथ आर नॉट वर्किंग.
You didn't tell it to management to rectify it. It means what you saw in that opportunity to do a fraud. और मान लो आपकी ईएमआई है 2 लाख पर मंथ की, आपने हाउसिंग लोन लिया 5 करोड़ का, लेकिन यू केम टू नो दैट कि कंपनी इज गोइंग टू थ्रो यू आउट बिकॉज ले ऑफ इज हैपनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स. अब बताओ व्हाट यू सी? प्रेशर. अब आपके ऊपर क्या है? प्रेशर कि अगर मेरी जॉब चली गई तो हाउ विल आई बी एबल टू पे माई ईएमआईज. वो होता है प्रेशर. फ्रॉड करने के 3 ही रीजन होते हैं, हमेशा याद रखना, या तो प्रेशर, या अपॉर्चुनिटी, या रैशनलाइजेशन. अब विजय माल्या ने क्या किया था? 6,500 करोड़ का लोन लिया एसबीआई से, 9,500 करोड़. और हम लोग बोलते हैं वो लोन लेके कहां पे भाग गया? लंदन भाग गया. लेकिन एक्चुअली वो लंदन नहीं भागा. ही पेड द सैलरीज ऑफ हिज किंगफिशर एयरलाइंस विच वर पेंडिंग फॉर लास्ट 3 years. 250 एम्प्लॉइज की सैलरी पे की रही उसने लास्ट हाउ मेनी ईयर्स का? 3 years, 1 साल. अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ही डिड अ वेरी राइट थिंग. ही डिड नॉट मेक द एम्प्टी स्टमक ऑफ इट्स स्टाफ. बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसने स्कैम किया. उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन. दैट इज कॉल्ड व्हाट? When you know that you are doing a dishonest act, but your attitude says that yes, I'm going to do it. उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन. ये 3 ही रीजन होते हैं फ्रॉड करने के. अब मेरे को ये बताओ, अब मान लो आपको हैंड टू माउथ सिचुएशन आ गई. बैंक आपके घर में बैठा है, आपके घर में बीवी है, बच्चे है, हस्बैंड है, माँ बाप है, डिपेंडेंट है, और बैंक राउडी रिकवरी एजेंट्स को लेके आपके घर में बैठा है. व्हाट वुड यू डू इन दैट केस? आप क्या करोगे? आर यू अंडर प्रेशर टू डू अ फ्रॉड और नॉट? क्योंकि यू डोंट वांट योर होल फैमिली टू सफर बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन. तो ये सारी चीजें याद रखना हमेशा. फ्रॉड एंड एरर्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रॉब्लम इज वी कांट डू द ऑडिट फुल्ली. We do the testing, and just because we do the audit on the testing basis, that is a simple reason we can never give a which assurance? Absolute assurance. We ended up giving reason. इतने सारे factors हैं which put together pushes you towards giving the which assurance? Reasonable assurance. Did you get the point? ये सारा जो ब्लू कलर का पार्ट है ये आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर दिया हुआ पूरा. अगेन जस्ट इसको आपको एक बार रीड आउट करना है. जस्ट रीड इट आउट. हाँ भाई रीड कर. दिख रहा है या जूम करूं? श्योर. चलो पढ़ो लाउडर थोड़ा सा. It is basically a skill, just like a professional judgment, which makes the auditor alert for any particular situation. Next one. The exercise of professional skepticism is fundamental to the successful performance of auditor, audit firm, and the audit profession as a whole, discharging their responsibilities to the stakeholders of business entities. सर देखो मेरे को सुनो. रिमूव प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फ्रॉम योर ऑडिट, यू आर जीरो. क्योंकि वाई द शेयर होल्डर्स आर बिलीविंग योर सिग्नेचर, वाई द लेंडर्स आर वेटिंग फॉर योर रिपोर्ट? क्योंकि दे नो दैट कि दिस पर्सन इज प्रोफेशनली स्केप्टिकल. व्हाट वी कांट सी द थिंग्स ही कैन. इसीलिए तो हमें हायर किया जाता है. नहीं तो फिर कॉस्ट ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का फायदा ही नहीं है. दैट इज द रीजन वी आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, एंड दैट इज द रीजन वी गेट मेंबरशिप नंबर एंड रजिस्ट्रेशन आईडी. Because they believe that कि you are professional skepticism. What we can't see, you can see the things. अब आप एक नॉर्मल इंसान को पूछो the same balance sheet, if you ask the normal person ना, he will say that yes sir, it is nothing but called profitable company. Do you remember this example I told you? एक वो balance sheet वाला example बोला था ना? He will say that, हाँ, he will say that yes, it is a profit making company. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बोलोगे तो उन्होंने बोला हाँ दिख तो रहा है 16.5 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन उसे ये नहीं पता ना कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इज नॉट अ रेकरिंग आइटम, इट इज एक्सेप्शनल आइटम. आज आई कल नहीं आएगी. तो कल अगर ये आइटम रिमूव हो जाएगी बैलेंस शीट में से, व्हाट विल हैपन? इट विल टर्न इनटू व्हिच कंपनी? लॉस मेकिंग कंपनी. तो हु हैज टू टेल दैट? ऑडिटर. तो दैट्स व्हाई ऑडिटर ऑलवेज हैव टू मेंटेन व्हाट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सो दैट which whole in discharging his responsibility towards whom? Stakeholders of the business as well as what? Society at large. So that wrong information should not be going to their ears. That's why we are being hired. And due to that, professional skepticism is the biggest quality what a cost auditor should have. Next point, Padu. What do you mean by contradictory things? When do you question the things?
when the things are matching, what your lawyers are saying and what the management is saying is matching. Do you have to contradict? No. When do you contradict? When it mismatches. So professional skepticism is necessary to the critical assessment of audit evidences. This includes questioning the contradictory audit evidences and reliability of documents and response to inquiries and other information and explanation obtained from the management and TCWJ. Next one. Also includes consideration of sufficiency and appropriateness of audit evidence taken in the light of circumstances. For example, in the case of हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू. तेरे को पता है पैरा लैंग्वेज नाम की चीज होती है? क्या होता है पैरा लैंग्वेज? एनीबॉडी नोस? कॉमास. तेरे को ऐसा लग रहा है बटन दबा दिया तेरा और तू रीड आउट करते जा रहा है. भाई थोड़ा सा स्ट्रेस. आप पढ़ो. So it means what they are trying to tell you is that it is all about your attitude, it is all about your mindset, and it is not only something which you should know. You should also have to nurture your audit staff to ensure that they should also behave professional skeptical. Because reason being simple, your 90% of the audit you never do. You get it done by your staff. आपकी टीम को भी यही चीज पता होना चाहिए कि what do you mean by professional skepticism. Continue next. Action permeate the entire audit process and are integral to what? ये पूरी बकवास लिखी हुई है. इसके अंदर अपने को मेन चीज क्या है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का यूज कहां पे होना चाहिए. व्हेन द थिंग्स आर मैचिंग और कॉन्ट्रडिक्ट. तो याद रखो जहां पे कुछ तो भी डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द वन ओपिनियन एंड अनदर ओपिनियन, कॉन्ट्रडिक्शन लीड्स टू द यूज ऑफ विच वन? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. नेक्स्ट पढ़ो. इसके ऊपर अपन इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं भैया, ये 4 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन आता है एग्जाम में. डिफाइन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. और चलो मेरे को एक काम करते हैं, लेट मी टेक यू टू द मेन पॉइंट कि व्हाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज रिक्वायर्ड. दीज आर द एरियाज वेयर यू मैंडेटरली हैव टू फॉलो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. रीड द एरिया नंबर 1. Which transaction? Unusual transaction. Over generalizing when drawing conclusions from the. कभी भी याद रख लो, when everything is going smooth ना, there is also a problem. कि why everything is going smooth? Seriously, वो odd लगता है when, say for example, when I go to my place and when I see that she is asking me a water or she is giving me the food without asking, कुछ तो एसबी प्रद्युमन अंदर से जाग जाता है, यहाँ तो इसको कोई बैग चाहिए, यहाँ पैसे चाहिए, यहाँ कुछ तो भी गिफ्ट विफ्ट शी इज लुकिंग फॉर. क्योंकि व्हेन एवरीथिंग गोज स्मूथ ना, दैट इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट कि कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज अदरवाइज द थिंग्स डज नॉट गो स्मूथ एज व्हाट यू आर सीइंग टुडे. नेक्स्ट वन, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट assumptions in determining what nature, timing and extent of the audit procedures and evaluating. वही मैंने तुम्हें बताया था, assumptions means difficulty, time and cost. ये आपकी 3 inappropriate assumptions है. कभी भी आपको चीज डिफिकल्ट लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है you will skip it. You have to do it. Just because you have a less time, that is your problem. Manage it. And cost you need not worry. Who will incur? Client. So these are the areas where you definitely have to apply what? Professional skepticism. Next one, ये वाला पॉइंट तो आपको बताइए. मैं तुमसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऑटोमेटिकली ये टॉपिक हो जाएगा. मेरे को ये बताओ, IR इंटू CR इंटू DR याद है? What is these two having a relationship with this? सेम चीज अभी अपन एक चीज करेंगे, ध्यान से सुनना. सपोज आप क्लाइंट का क्या चेक कर रहे हो? सेल्स. ध्यान से सुनना. एंड यू केम टू नो दैट कि IR इंटू CR इज हायर बिकॉज ऑफ पुअर ICS.
What would you do to your sample size? आप सैंपल साइज को क्या करोगे? इंक्रीज कर दोगे. ठीक है, हमने सैंपल साइज को इंक्रीज कर दिया. व्हाट डज दैट मीन? लेस कवरेज और मोर कवरेज. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड बेंचमार्किंग? क्या होता है बेंचमार्किंग? बेंचमार्किंग इज नोन एज मटीरियलिटी. याद रखना. व्हाट डू यू मीन बाय बेंचमार्किंग? ध्यान से सुनना. अब मान लो आपके सेल्स इनवॉइस है, इसमें 1 लाख सेल्स इनवॉइस है. हाउ मेनी सेल्स इनवॉइस? Obviously you can't do the full. Are you getting the point? And some invoices are 10,000 rupees also, and some invoices are more than 10 crore rupees also. अब प्रॉब्लम यह है कि आप यहां पे कौन सी सैंपलिंग यूज करोगे. इज इट द सिंपल रैंडम सिलेक्शन और इज इट द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सिलेक्शन? स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? मैंने क्या किया, मैंने पहले ये सारी पॉपुलेशन को 4 सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया. क्या? 10,000 to 10 lakhs, 10 lakhs to 1 CR, 1 CR to 10 CR and more than what? मैंने इसको इनवॉइसेस को पहले तो सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया, 4 पॉपुलेशन. इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन. व्हाट डू वी कॉल इट एज? अब मेरे को ये बताओ, वॉज इट अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन और नॉट? यस. हेट्रोजीनियस मतलब क्या? ऑल इनवॉइसेस वाज सेम और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. आई कांट डू जस्ट सिंपल रैंडम सिलेक्शन. अब मैंने क्या कर दिया, मैंने हेट्रो पॉपुलेशन को किस में शिफ्ट कर दिया? होमो में. नाउ दिस बिकेम अ व्हिच पॉपुलेशन? होमो. होमो पॉपुलेशन मींस वेयर ऑल द इनवॉइसेस हैव द सेम करेक्ट. इट मींस इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स व्हिच इनवॉइसेस आर देयर? रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 10 lakhs. ये वाले में 10 lakhs to 1 CR, 1 CR to 10 and more than. अब करो RS, RS, RS and RS. रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन एंड रैंडम सिलेक्शन. ठीक है ना? RS, 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 RS. Now tell me where you would have got the better result, in the first case or in the second case? Do you agree with me? अब मेरे को ये बताओ, बेंचमार्किंग क्या होती है? If you have heard, ध्यान से सुनो. अगर मेरे को ज्यादा कवरेज करनी है तो पहले मैं तुम्हें बेंचमार्किंग का मीनिंग बताता हूं. बेंचमार्किंग मींस starting point of your verifying the items. Which point? Starting point. मतलब setting up an amount beyond which you will verify but below which you will ignore. अब मेरे को ये बताओ, अगर आपको ज्यादा कवरेज करनी है तो your benchmarking should be lower amount or higher amount? Lower amount. कभी भी याद रखो. If you want to cover more, your benchmarking should be less or lower. क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बेंचमार्किंग डाली 1 लाख. व्हाट इज माय बेंचमार्किंग? इट मींस ऑल द इनवॉइसेस व्हिच आर लेस देन व्हाट? 1 लाख आई विल नॉट वेरीफाई. आई विल वेरीफाई ओनली दोज इनवॉइसेस व्हिच आर मोर देन व्हाट? 1 लाख. बट व्हाट इफ आई पुट माय बेंचमार्किंग 10,000? अब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय 10,000? ऑल द इनवॉइसेस व्हिच आर बिलो व्हाट? 10,000. आई विल नॉट वेरीफाई. आई विल वेरीफाई ऑल दोज इनवॉइसेस व्हिच आर मोर देन इक्वल्स टू. अब बताओ, वेयर इट इज मोर कवरेज? तो माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. व्हेन IR इंटू CR इज हायर, आपने क्या इंक्रीज किया? सैंपल से. आपने क्या इंक्रीज करी? कवरेज. तो आपकी बेंचमार्किंग क्या होनी चाहिए? लोअर. डिड यू गेट द पॉइंट? तो इसका मतलब IR इंटू CR मतलब ऑडिट रिस्क इज हैविंग अ व्हाट रिलेशनशिप विद द बेंचमार्किंग? इनवर्स. हायर इज द ऑडिट रिस्क, lower should be your benchmarking. Lower is the audit risk, higher should be your bench. अब मान लो, चलो IR into CR is very less due to good ICS. अब मैं क्या करूं? Should I decrease my sample size or increase? Decrease my sample size. It means I want to decrease my what? Coverage. Coverage decrease करनी है तो benchmarking को ऊपर कर दो. मान लो मैंने benchmarking कर दी 1 CR. What does that mean? All the invoices below 1 CR, I will not verify. I will only verify over. So, what is the relationship between the audit risk and materiality you found? Inverse. Which relationship? Inverse. Higher the risk, lower should be your materiality. And lower the risk, higher should be your materiality. इसका relationship same है what we do in IR into CR with what? DR. Same relationship you will find between audit risk and materiality. Is it clear? ठीक है. अब ये पढ़ो क्या है मटीरियलिटी.
First of all, let me tell you one thing. What is materiality? Materiality is something which you see from user's point of view. Which point of view? अब लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस का टर्नओवर है 4 लाख करोड़ का, ठीक है। अब 4 लाख करोड़ का टर्नओवर है, आई फाउंड वन फ्रॉड ऑफ 50 lakhs rupees in the company. How much is the fraud? Look at the size of the company. 4 लाख करोड़, उसमें कितना का फ्रॉड है? इज इट रिकग्नाइज्ड अमाउंट और नेग्लिजिबल? बट फ्रॉड तो फ्रॉड है ना भाई। आर यू गेटिंग? हु डिजर्व्स टू नो दैट? My users deserves to know that, but it is not that big कि it is affecting whom? Auditor. इसे हम लोग बोलते हैं materiality. What do we call it as? Which may affect the users but may not affect whom? Auditor. लेकिन अगर मैं यहां पे 500 crores लगा दूं तो आप बताओ, is it material? Now it is also going to affect whom? Auditor. तो इसे बोलते हैं pervasiveness. What do we call it as? परवेसिवनेस। तो ये दो वर्ड याद रखना, मेटीरियलिटी, परवेसिवनेस। एवरी आइटम विच इज मटेरियल मे और मे नॉट बी परवेसिव, बट एवरी आइटम विच इज परवेसिव हैज टू बी व्हाट? मटेरियल। मटेरियलिटी होती है विच ओनली अफेक्ट्स होम? यूजर्स, बट नॉट ऑडिटर। एंड परवेसिवनेस इज विच अफेक्ट्स यूजर एज वेल एज व्हाट? ऑडिटर। बोथ आर नोन एज व्हाट? ऑडिटर्स कॉन्सेप्ट। तो कभी भी याद रखना, एक मटेरियलिटी होती है और एक परवेसिवनेस। अब बताओ मैं एडवर्स किस में दूं, क्वालिफाइड किस में दूं? गिव मी द आंसर। वेयर शुड आई गिव द एडवर्स ओपिनियन? फर्स्ट वाले केस में आई विल गिव व्हाट? क्वालिफाइड, एंड दिस वाले केस में आई विल गिव व्हाट? एडवर्स। अब क्यों चेंज हुआ? इसका मतलब जहां पे M प्लस P आएगा वहां पे हमेशा क्या आएगा? या तो एडवर्स या डिस्क्लेमर। ये अपन ना रिपोर्टिंग सीरीज में पढ़ेंगे। देयर आई विल टेल यू वन चार्ट कि हाउ डू वी एक्सप्रेस qualified, adverse or disclaimer opinion. Just because the word materiality came, that's why I started telling you. So materiality is something which has to be seen from whose point of view? User's point of view. Is it clear? ये पूरे पैराग्राफ में इसके रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ है कि what is the relationship between audit risk and materiality? Positive or inverse? Inverse. ठीक है? तो एक सेकेंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, नॉन कंप्लायंस, इफेक्टिव डेट, थोड़ा सा ही स्टैंडर्ड है। तो एक काम करो, आप पहले लिखना शुरू करो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में आई हैं। क्योंकि नाउ आई डोंट थिंक सो दैट यू आर इन द पोजीशन टू लर्न एनीथिंग न्यू। इट्स बेटर दैट यूटिलाइज योर टाइम इन व्हाट? राइटिंग। राइट द हेडिंग। हमने स्टार्ट करा था लिखना। अरे यार पहले उनको बोलो ये चेयर चेंज करो यार। इट्स वेरी लाइक not possible to sit here for a longer period of time. Everyone using this only? वो क्यों नहीं यूज कर रहे? वो भी खराब है, ये भी खराब है, ये इस तरफ बेंड हो रही है, बैक पेन आ रहा है यार। ओके, पुट द हेडिंग 103 overall objectives of an independent cost auditor. Heading overall objectives of an independent cost auditor. Overall objectives of an independent cost auditor, and लिख लिया, and conduct of an audit in accordance with cost auditing standards. And conduct of an audit in accordance with cost auditing standards 103. Cost auditing standards 103. अंडर दैट मेरे ख्याल से मोस्टली अपनी चीजें सेम है। कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। पुट द हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। Objectives of this standard. To obtain reasonable assurance, first one, to obtain reasonable assurance, to obtain reasonable assurance about whether
cost statements to obtain reasonable assurance about whether cost statements are free from cost statements are free from so that so that auditor can express an opinion. So that auditor can express an opinion. Auditor can express an opinion. Second point, to report to report the cost audit to report the cost audit to report the cost audit in an appropriate format. To report the cost audit in an appropriate format. What is the form number? CRA 3. To report the cost audit in an appropriate format, bracket में लिखो in form number CRA 3. Next one. Also make observations and suggestions. Also to make observations and suggestions in case the need arises. Also to make observations and suggestions in case need arises. Definitions. Put the heading definitions. Same as 101. Put the heading. Same as 101. All the definitions which we have done in 101 are same definitions which we have to copy paste in 103. Only 2 to 3 extra are there. Same as 101. Okay? Additional definitions. Put the heading. Additional definitions. First one is non-compliance. Non-compliance. Under that, right? An act of omission or commission. An act of commission or omission. Act of commission or omission. Second point, either done intentionally or unintentionally. Either done intentionally or unintentionally. Third point, either done intentionally or unintentionally. Third point, by the entity. Third point, by the entity against the laws and regulations. By the entity against the laws and regulations. Fourth point, involving employees, management and TCWG. Involving employees, management and TCWG. Combine all the 4 points now. Read it. An act of omission or commission either done intentionally or unintentionally by the entity against the laws and regulation involving employees. Write one note below that. Write one note. Personal non-compliances not to be recognized by auditor. Personal non-compliances not to be recognized by the auditor. Personal non-compliances not to be recognized by the auditor. Not to be recognized by the auditor. Next one. Criticism. Next definition.
Overall audit strategy we have covered over there. Professional judgment we have covered over there. Now criticism. Second additional definition. Criticism. An attitude. एक काम करो, इसे क्रिटिसिज्म मत लिखो, इसको लिखो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. क्रिटिसिज्म, ओके, इफ यू रिटन इट्स फाइन. उसके ब्रैकेट में या एंड में कहीं पे भी लिख लेना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. एन एटीट्यूड which includes a questioning mind, an attitude which includes questioning mind and alert mind, questioning mind and alert mind towards frauds and errors, questioning mind and alert mind towards frauds and errors with critical examination of audit evidence. With critical examination of audit evidence. Critical examination of audit evidence. This is called your definition part. Okay? Now put the heading requirements with critical examination of audit evidence. Now put the heading requirements. ये किसने बंद किया? You switched off. Who? AC किसने बंद? नहीं, I don't want, but I said ना, you opened the window, that's why. Okay, no problem. It's okay. Requirements. Point number 1. I think yours class is the only one which is air conditioned, which they are using presently. In remaining all classes, they are not switched it on so far. Yours from the day 1. Day 1 से तब तो ठंड चल रही थी, तब भी यूज हो रहा था. चलो लिखो पॉइंट नंबर 1. Cost auditor shall comply with ethical requirements of the institute. Shall comply with ethical requirements of the institute. Ethical requirements of the institute. Point number 2. Not only CAS he has to follow, not only CAS he has to follow, not only cost auditing standards he has to follow, not only CAS he has to follow, comma, he shall also follow other laws and regulations. He shall also follow other laws and regulations. Not only CAS he has to follow, he shall also follow other laws and regulations. Third point. A cost auditor must understand entire text of standards. Cost auditor must understand entire text of cost auditing standards. He must understand entire text of cost auditing standards. Fourth point. He shall not use the cost auditing standards if it is impracticable to use them. He shall not use cost auditing standards if it is impracticable to use them. Impracticable to use them. Okay? And the last point. In exceptional circumstances, he may
in exceptional circumstances, comma, he may depart from auditing standards. In exceptional circumstances, he may depart from auditing standards and must use alternate procedures instead. Must use alternate procedures instead. Must use alternate procedures instead. Instead. Bracket में लिखो. But he shall document at the end. In the bracket, right? But he shall document at the end why he chose departure. He shall document at the end why he chose departure. मतलब why he gone against the standard. He should document it. I think I told you कि sometimes it is not possible to follow the standards. So you can go away from the standards. But in the end you should document why you chose to go. क्योंकि if the peer reviewer or quality reviewer at the end will ask, you should be in a position to tell कि this is the reason I chose to go beyond standard. Did you get the point? चलो आज के लिए इतना बस है. And कल अपन wind up करेंगे with the last standard also. After writing this, we'll wind up with the last standard. What is the last standard? 104. Knowledge of the business. Done? इस बार आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग काफी लेंदी हो गए क्योंकि इन 2016 सिलेबस इट वाज ओनली 1 पेज ईच. 4 पेजेस में पूरा चैप्टर हो गया था. आज अपनी 4th क्लास है, पूरा चैप्टर नहीं हुआ. तो 2022 में थिंग्स हैव चेंज्ड. चलो एनीवेज, गुड फॉर यू. चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू.